Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss multi-storied cropping and crop rotation. So these two topics will be discussed in this video. So first we will begin with multi-storied cropping, or it is also known as multi-layered or multi-level cropping. Okay, basically here we are growing short duration fruits or vegetables in the space between the rows of principal horticultural crops, plantation crops or orchard crops. So basically, suppose say plantation crops such as coconut. So the space between the coconut plants in the plantation will be 6 meters or 8 meters depending upon the variety, so it is too much. So instead of wasting that space, particularly in the initial stages, so coconut, it will take uh, at least, depending upon the variety, at least 4 to 5 years or even 6 years to come to fruiting. Now we have dwarf yielding varieties which come to fruiting or which come to flowering early. But if you go to traditional varieties, they will take some time. So even in case of mango, for example, it is an orchard crop or some other fruit crop. So it will take at least 3 to 4 years, even for your dwarf or high density varieties. It will take 3 to 4 years to come to flowering. So during this initial period, when the main orchard crop or plantation crop is in the juvenile phase before it enters into reproductive phase, so initial period of growth is slow and the spacing between the plants is too much. So instead of wasting the space, we go for fruits, quick growing fruit crops like papaya or vegetable crops in the gap between these principal horticultural and plantation crops. So that is the meaning of this multi-storied or multi-layered or multi-level cropping. So let us look at the meaning of multi-storied or multi-layered cropping. So it is a system of cropping where short duration, quick growing fruits and vegetables, food and fodder. So you can also grow grain or fodder crops also. They are grown between the interspaces of principal horticultural fruits and plantation crops. So fruits and plantation crops initially during their juvenile phase, in the initial 4 to 5 years, they grow slowly before their canopy closes. So grow होके उनका जो branches हैं, they will spread and canopy will close. तब तक sunlight मिलता रहेगा. So once the canopy closes, there won't be enough sunlight between the space, interspace, right, space between the rows. तब enough sunlight नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे ग्रो नहीं कर सकते. बट इन द इनिशियल ईयर्स, जब तुम्हारा प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चरल प्रिंसिपल फ्रूट क्रॉप जो इंडिविजुअल प्लांट है, इट विल बी स्मॉल सैपलिंग, इट विल ग्रो स्लोली. सो एटलीस्ट 3 to 4 years जो इनिशियल पीरियड है, उस टाइम पे you will have enough space left, so enough sunlight, so to grow these short duration fruits, vegetables, food grain crops or fodder crops. Okay, so it utilizes solar energy and soil layers effectively. So basically the vertical space is efficiently utilized. So vertical space both above the ground and below the ground. So I was giving you an example. So ये हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. I just give you an example where, sorry, where we have coconut, pepper, black pepper, cocoa and pineapple. They are grown together. So their height above the ground and their root system, they are at different levels. So coconut के बाद pepper, black pepper, then you have
cocoa which grows up to height of 2 to 3 meters, and you have pineapple, right? So it grows up to 1 meter something. So below the ground, coconut has a root system up to 1 meter. Black pepper, very shallow root system, and it is a vine. Cocoa has a root system up to 2 meter, and pineapple suppose say 40 centimeters. So above the ground, their height is different, their requirement of sunlight or their habit is different. Below the ground also their root system is different. They are taking nutrients from different zones. They are not competing. They are taking nutrients from different zones. Their light requirement is also different. Coconut, it can tolerate high amount of sunlight, high light intensity. Cocoa, it is a shade loving plant. It grows well under the shade of coconut, right? So it is effective utilization of vertical space both above the ground where sunlight is effectively utilized and below the ground where nutrients are taken from different zones of the soil. So efficient utilization of space. Okay, so the canopy orientation of component crops and localization of the root system at distinct zones are tools of the system. So canopy orientation, their ability to tolerate different light intensity. So coconut can tolerate high light intensity, whereas cocoa loves shade, and they take nutrients from different zones. So basic objective यहाँ पर क्या है? Effective utilization of space. Vertical space की बात कर रहे हैं, both above and below the ground. So based on the principle of annidation, complementation, complement कर रहे हैं एक दूसरे को. They are complementing each other. For example, यहाँ पर जो best example तुमको मिलेगा, coconut, black pepper, cocoa and pineapple. Their height is different. Coconut का height up to 10 meters. Black pepper, which is a vine which grows with the support of your coconut. Cocoa, it grows under the shade of coconut. It grows up to height of 3 meters. Pineapple up to 1 meter. इनका root system भी देखो. Coconut, इसका root system up to 100 centimeters और 1 meter तक जाता है. Cocoa, it can root system can go up to 2 meters. इसका 40 centimeters. So symbolically we can draw it like that. Coconut, black pepper, cocoa, pineapple. इनका root system भी इस तरह से तुम draw कर सकते हो. Right? Now, so this is though it is not like the exact photograph of the example जहाँ पर black pepper, यहाँ black pepper नहीं है, तो वो जो सिस्टम है केरला उस तरफ फॉलो करते हैं. दिस इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उस तरफ के फोटोज हैं, राइट? सो यू हैव कोकोनट एंड कोकोआ. कोकोनट के ऊपर तुम ब्लैक पेपर को ग्रो कर सकते हो, बट ये जो क्लाइमेट है यहाँ का, दैट विल नॉट बी सूटेबल. केरला और तुम्हारा जो पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु का क्लाइमेट है, दैट इज मोर सूटेबल. सो बनाना भी ग्रो कर सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो बनाना ग्रो कर रहे हो, कोकोआ बनाना. हियर कोकोआ इज ग्रोन बिटवीन द coconut plants. यहाँ पर भी वही एग्जांपल है. So this is how it looks. Now there are certain prerequisites, conditions to be followed. So there are certain important conditions that need to be followed in multiple cropping, multi-storied cropping. Now crops should be agronomically suitable and technically feasible. Now agronomically suitable means suitable to the climatic conditions, suitable to the soil. It should be suitable and technically feasible also. Now select the most profitable crops capable of utilizing the growth resources and land resources in best manner. Obviously you have to go for the most profitable crop depending upon the market requirements, demand के हिसाब से तभी तुमको most profit मिलेगा. Now the crop combinations and input ratios should be compatible with the farmer's skill, enterprise preference, health, age and capital. So
ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी तुम क्रॉप्स चूज कर लोगे, डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ द फार्मर. फार्मर शुड बी फेमिलियर विद दैट क्रॉप, उसे पता होना चाहिए. Okay, now depending upon the capital also you have to see whether the farmer will be able to invest on such crop. उसके पास कितना कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल फॉर सम क्रॉप्स इट इज हायर. हाँ, इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए, देन ओनली चूज यू कैन चूज सर्टेन क्रॉप्स. अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट्स होना चाहिए, वो सीड मटेरियल मिलना चाहिए, लेबर मिलना चाहिए, वो सब अगर है देन यू कैन गो फॉर multi-layered or multi-level cropping. So you have to make sure all these are available, then you can go for multi-storied cropping. All right, next is crop rotation. So crop rotation is growing of different crops on the same piece of land. So you are following a sequence of crops. So एक ही crop नहीं लगा रहे हो. Crop rotation is different from, it is opposite of your monoculture. So crop rotation is opposite of your monoculture. तो यहाँ पर तुम एक पर्टिकुलर रोटेशन को फॉलो कर रहे हो, राइट. सो क्रॉप रोटेशन रिफर्स टू ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन. सो यू आर ग्रोइंग different crops one after another on the same piece of land in a specific period of time. Now suppose you have seasons Kharif, Rabi and Zaid, समर. ठीक है. सो खरीफ में तुमने पैडी ग्रो किया, रबी में यू वेंट विथ चिकपी, एंड जैद यू कैन गो फॉर green gram or some other pulse. This is the sequence of crop you are growing on your piece of land. So एक के बाद एक. So crop rotation refers to growing of different crops in succession. Succession means one after another. खरीफ, रबी एंड जैद तीनों सीजन में एक के बाद एक तुम ये क्रॉप्स लगा रहे हो. ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, पैडी, चिकपी, ग्रीन ग्राम. इट इज ऑपोजिट ऑफ मोनोकल्चर. मोनोकल्चर में क्या है, सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. इट इज ऑपोजिट ऑफ मोनोकल्चर, राइट. सो हियर इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बोला है. अब देखो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मे नॉट बी 1 ईयर. जरूरी नहीं है कि 1 ईयर में ही ये खत्म करना है, 3 सीजन में ही खत्म करना. नो. नाउ दिस रोटेशन, नाउ सपोज ये तुम्हारा जो रोटेशन है ये 1 साल में खत्म हो जाता है. दिस इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर. नाउ सपोज देयर इज अनदर फार्मर हु इज प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रोटेशन. So suppose वो लगाता है पैडी, then he goes for chickpea, then he goes for green gram, then in the next season he goes for onion, and then he goes for maize. So ये फर्स्ट फार्मर है जिसका रोटेशन में 3 क्रॉप्स है. Then there is second farmer whose rotation has 5 crops. अब 5 crops एक साल में तो खत्म नहीं होंगे. So a rotation, a crop rotation may take more than 1 year. 1 year में ही खत्म होना है बल्कि कंडीशन नहीं है. In a specific period of time, and this time can be more than 1 year also. ऐसा नहीं कि 1 year में ही खत्म होना चाहिए रोटेशन. नो, इट कैन बी. सो ये रोटेशन फॉलो कर रहा है. सो पैडी, चिकपी, ग्रीन ग्राम, ऑनियन, मेज. फिर स्टार्टिंग पैडी, चिकपी, ग्रीन ग्राम, ऑनियन, मेज, फिर यही रोटेशन. सो दिस रोटेशन इज फॉलोड बाय सेकंड फार्मर. सो आपका जो रोटेशन है उसमें 3 क्रॉप ही होंगे, 2 क्रॉप ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन बी 4 क्रॉप्स, 5 क्रॉप्स और मोर देन दैट. सो योर रोटेशन पीरियड can be more than 1 year also. Okay, so in a specific period of time बोला, लेकिन 1 साल में होना है बोल के कंडीशन नहीं है. It can be more than 1 year. All right.
Now, so the main objective here is to get maximum profit from least investment without impairing soil fertility. So soil fertility को harm किए बिना, soil health को damage किए बिना maximum profit कमाना है, like any other enterprise. That is the main goal. Okay, so we said that in a specific period of time, growing of different crops in succession on a piece of land in a specific period of time, it may not be restricted to 1 year, it can be more than 1 year also. So your rotation may be of 5 crops or 4 crops. Now your crop rotation may also include fallow. जरूरी नहीं है कि हर सीजन में क्रॉप लगेगा ही लगेगा. Now हो सकता है कि fallow भी हो. Your rotation may include a fallow. Now let us take an example. खरीफ, रबी एंड ज़ैद, 3 सीजन है. खरीफ में पैडी लगाया है, रबी में चिकपी लगाया है एंड ज़ैद में कुछ नहीं लगाया. सो फैलो, फैलो छोड़, खाली छोड़ देना मैंने, फैलो. So he has left his field fallow without any crop. So a rotation may include fallow. जरूरी नहीं है कि हर सीजन में क्रॉप लगाना ही लगाना है. So paddy chickpea fallow, paddy chickpea fallow. He can, the farmer can also practice this rotation. Okay. So this may also be defined as, crop rotation can be also defined as repetitive cultivation of an ordered succession of crops. तो यही ऑर्डर फॉलो करोगे, पैडी चिकपी फैलो, पैडी चिकपी फैलो, या फिर ये जो सेकंड फार्मर था, पैडी चिकपी ग्रीन ग्राम ऑनियन मेज, पैडी चिकपी ग्रीन ग्राम ऑनियन मेज. दिस विल बी फॉलोड repetitively. So crop rotation may be defined as repetitive cultivation of an ordered sequence of crops or ordered succession of crops or crop and fallow. जरूरी नहीं है कि हर सीजन में क्रॉप लगाओगे लगाओगे. So your rotation may include fallow also on the same land, and one cycle may take more than 1 year to complete. एक साल में ही रोटेशन खत्म होना है ऐसा जरूरी नहीं है. सो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बोला है, बट दिस पीरियड ऑफ टाइम कैन बी 2 years also, 1.5 year also. I think now we understand the meaning of crop rotation. Now there are certain principles that one must follow while practicing crop rotation, वरना soil health को harm होगा. Okay, या फिर तुम्हारा crop yield reduce हो सकता है. So you need to follow certain principles in crop rotation. Now let us look at the principles of crop rotation. So whenever you are writing an answer regarding crop rotation, ये principles को जरूर mention करना है. So crop with taproot system should be followed by those which have fibrous root system. So एक monocot crop लगा रहे हो तो next crop तुम्हारा dicot होना चाहिए. Okay, so this will help in proper and uniform use of nutrients and water from the soil, and the roots do not compete with each other. Now for example, तुमने फर्स्ट सीजन में अगर कोई ग्रास क्रॉप लगाया है, वीट या फिर पैडी लगाया है या मेज लगाया कोई, उसका क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. देयर रूट सिस्टम इज शैलो, दे विल टेक न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम दिस जोन. नाउ इन द नेक्स्ट season you go for taproot system, crop which has taproot system. So taproot system, they go deeper. So roots also take nutrients from different zone. यहाँ पर देखो, यहाँ पर top 25 to 30 centimeters से यहाँ पर ले रहे थे, यहाँ पर 60 to 70 centimeters or even up to 1 meter, the roots, they are taking nutrients from that zone. So अलग अलग लेयर्स से न्यूट्रिएंट्स रिमूव कर रहे हैं दोनों क्रॉप. Okay, so in the first season if you have grown a shallow rooted crop, that is a monocot, in the next season you go for a taproot or dicot crop. So taproot system wala crop should be followed by shallow root system crop. So दो क्रॉप्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो क्विक सक्सेशन में ग्रो कर रहे हो जिनका रूट सिस्टम एक जैसा है. Okay,
Then a leguminous crop should always be there in a rotation. So leguminous crop should be grown after non-leguminous crop because legumes they fix nitrogen. Okay, so they fix nitrogen, they have symbiotic association with the nitrogen fixing bacteria, so they will replenish the नाइट्रोजन जो तुम्हारा मोस्ट यूज्ड न्यूट्रिएंट है, बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, सो इट विल improve the soil fertility. So leguminous crop definitely होना चाहिए तुम्हारे रोटेशन में. So legume with non legume. So non legume जो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज करता है एंड इट डज नॉट फिक्स, नेक्स्ट सीजन में तुम लेग्यूम लगाओगे. सो लेग्यूम विल यूटिलाइज सम ऑफ द नाइट्रोजन बट लीव सफिशिएंट नाइट्रोजन फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. सो फर्टिलिटी को हार्म नहीं होगा. मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स शुड बी फॉलोड विथ लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स. मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स का मतलब है जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, दे टेक अप लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सो मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स. वरना तुम हर सीजन में मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लगाते रहोगे तो क्या होगा, इट विल ड्रेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सो मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप्स का एग्जांपल क्या, पोटैटो, शुगर केन, मेज, दे शुड बी फॉलोड विथ लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स, दे टेक लेस न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है. ये प्रिंसिपल्स तो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी डिमांड बेस्ड. ऑब्वियसली ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट इट इज एन इंपॉर्टेंट, आई मीन इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ऐड कर दिया है इसको. ठीक है, डिमांड बेस्ड होना चाहिए. एंड प्रॉब्लम, सपोज डिफरेंट एरियाज में अलग अलग प्रॉब्लम, एक एरिया है जहां पर ड्रॉट ज्यादा आता है, एक एरिया है जहां पर फ्लड्स ज्यादा आता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, यू चूज द क्रॉप. सो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी प्रॉब्लम बेस्ड. सो ये भी जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कोई भी अगर आंसर लिख रहे हो आप, मेंस का कोई आंसर लिख रहे हो, तो दीज पॉइंट शुड बी इन द फ्रंट. ये नीड बेस्ड होना चाहिए, दीज आर नॉट, ये पीछे लिख सकते हो आप. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जहां पर एरोजन ज्यादा होता है, ऑन स्लोपिंग लैंड्स विच आर प्रोन टू सॉइल एरोजन, सॉइल erosion promoting crops should be followed by erosion preventing crops. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एरोजन प्रोमोटिंग एंड एरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स जो है ऑल्टरनेटली लगाना है. एरोजन प्रोमोटिंग क्रॉप्स कौन से हैं, ग्रासेस जैसे मेज हो गया, सोरगम हो गया, एरोजन प्रोमोटिंग क्रॉप्स हैं. प्रिवेंटिंग क्रॉप्स क्या है, डाइकॉट्स जैसे तुम्हारे पल्सेस हैं, दीज आर एरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स. सो नाउ यू मे आस्क, सर एरोजन प्रमोटिंग क्रॉप्स लगा ही क्यों रहे हैं, हमेशा एरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स ही लगाओ ना. फिर एरोजन का प्रॉब्लम है तो ऑलवेज गो फॉर एरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स. व्हाई आर यू इवन ग्रोइंग एरोजन प्रमोटिंग क्रॉप्स. भैया मार्केट में डिमांड भी तो होना चाहिए ना. एरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप्स लगाने के लिए बोलो लेकिन बेच नहीं पा रहे हो मार्केट में, फिर फार्मर को मिलेगा क्या पैसा. सो एक साल प्रमोटिंग एक साल प्रिवेंटिंग रखो ताकि इजिली सॉइल पूरा एरोड ना हो. दैट कैन बी डन. Now, under dryland farming, go for those crops which can tolerate drought. This is common sense, right? Depending upon the situation, you choose the crops. So, ये वाला important है, promoting and preventing वाला point. This is more important. Obviously, which the reasons where rainfed farming is done, you obviously choose the crops which can tolerate drought. And low-lying conditions है जहां पर floods बहुत common है, तो you go for crops like paddy or jute which can tolerate waterlogging. So you choose the crops depending upon the climate or situation. Selection of crops should suit the financial condition of the farmer. Obviously, this is also very common sense, right? Crop should also suit the soil and climatic condition. Obviously, selection of the crop climate and soil के basis में होता है primarily, then market and farmers availability of input and everything. So ये भी एक important point है. This is also one of the important point that should be written in the front. Crops of the same family should not be grown in succession. यानी अगर तुमने एक crop लगाया suppose same family के tomato and chili, some pests are common दोनों में. कुछ pest based on their ability to feed on
डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स तुम बोल सकते हो. सम पेस्ट आर मोनोफैगस, यानी वो एक ही प्लांट पे खाते हैं. Some plants are some pests are oligophagus. Oligophagus means they eat on a range of plants, not many but few plants, primarily एक ही फैमिली का या फिर एक ही केमिकल कॉम्पोजिशन वाले प्लांट्स को अटैक करते हैं. सपोज some pest attack a particular family, they are restricted to eating only a few plants belonging to same family. Oligophagus बोलते हैं. So you have monophagous, oligophagus, जो कुछ प्लांट्स को अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स को नहीं, बट सम प्लांट्स बिलोंगिंग टू सिमिलर सेम फैमिली बिकॉज दे हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशन. देन यू हैव पॉलीफैगस. Polyphagous pest which attacks multiple types of plants belong to different families. So जो oligophagus pests हैं, so they may attack plants belong to the same family. So एक ही family के plants सक्सेशन में मत लगाओ. लाइक टोमेटो हो गया, टोमेटो के बाद इमीडिएटली चिल्ली मत लगाना या फिर ब्रिंजल मत लगाना, बिकॉज दे बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली. तो एक ही फैमिली के लगाओगे तो सेम पेस्ट में अटैक द अदर क्रॉप ऑल्सो. सो सेम फैमिली शुड नॉट बी, plants or crops of the same family should not be grown in succession because they may be attacked by the same pest. So they may act as alternate host for the insect pest. Apart from this, different types of weeds are also associated with various crops. So selection of the same type of crop or grasses, same family वाले crops नहीं लगाने चाहिए, because even some weeds are promoted by those crops. Now advantages क्या है crop rotation के, because it is being promoted and it is opposite of your monoculture. So obviously there are certain advantages, that is why it is promoted. Now advantages क्या है crop rotation के? So soil fertility is maintained. Now obviously when you are following the principles, so definitely in your rotation you should have a legume because it can fix nitrogen, right? So soil fertility is maintained if you include a legume, if you follow the principles. So these are the advantages. Soil is also protected from erosion and salinity and acidity. So soil is protected from erosion, soil fertility is maintained. Ideal crop rotation, अगर तुम follow करते हो principle को, you do not grow the crops of the same family in succession, then pest and disease attack will also be minimized. Okay, it also controls the weeds. Only if you follow the principles, then you have these advantages. Okay, so we have discussed multi-storied cropping and crop rotation. So crop rotation क्या होता है, उसके जो principles क्या है, these are important points. So whenever you are writing the means answer, definitely principles जो है उसका order देख लेना, important point should come in first. Okay, so that was multi-storied cropping and crop rotation. So we'll meet in the next video.